Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. It's me, your maths tutor, and today I'm going to discuss another interesting topic of sets, that is in how many ways a set can be described. So students, there are three ways to describe a set. First one is the descriptive form of a set, then set builder form, and tabular form. These are the three types through which we can describe a set. In descriptive form, we use words. If set is described in form of words or in a sentence, then we can say that this is the descriptive form of a set. In set builder form, we use symbols and letters. What do you mean by symbols and letter? Which type of symbols? Symbols like such that this is a vertical line, which is the abbreviation of such that. This is the symbol of belongs to. This is the symbol of does not belong to. This is the symbol of and. This is the symbol of or. This is the symbol of less than, and this will be the symbol of less or equal. This is the symbol of greater, and this will be the symbol of greater or this is the symbol of this is the symbol of greater or equal. Okay student, and what is the tabular form of a set? Tabular form of set means you have to list all the elements given in a set. So listing elements in a bracket. Okay, let's have an example so that our concept about these three forms of set will be more clear: descriptive form, set builder form, and tabular form. We have an example: the set of prime numbers less than or equal to 19. This is the descriptive form of a set. And what will be its set builder form? Set builder form is starts always from x such that x belongs to. x किससे belong कर रहा है? prime number से. So we use a letter here, prime number p. And what is the condition? Condition is that कि ये तमाम प्राइम नंबर्स इस तरह के हैं कि वो 19 से लेस और इक्वल हैं. सो x is less than or equal to 19. This is the set builder form. I'm going to differentiate all these three types with columns. Okay, now I'm going to write its tabular form. Tabular form, we have to use brackets, and we will list all the elements present in this set. This is the set of prime numbers, and prime number starts from 2, 3, 5, 7 and up to less than or equal to 19. It means 19 is included in this set. So this is the tabular form of a set. I hope you all are clear about what is the descriptive, set builder and tabular form of a set and how they can be described. Okay, and now we will do exercise 3.1. Question number 1.
its all parts. This is our exercise 3.1. Chapter name is sets and function and grade 9. Question 1 is write the following sets in set builder notation. Okay, the first part is 1, 4, 9, 16, 25, 36 and 484 up to 484. Okay students, let's have a keen look on this set. What you are getting from this set? This set is telling about these squares. 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4. Are you getting my point? 3 and 4, 5, 6 up to so on. And what will be the number which is the square root of 484? If you can't judge it by looking it, then you have to solve it, and you can find out its square root by using division method, and you have already studied this method in your previous classes like 6 and 8. So first of all make the pairs, and then 2 2s are 4, and next pair down, add these numbers and write here, and what would be here and here, so we get 84. 4 which number can be multiplied here? 2 would be multiplied, 2 2s are 4, 4 2s are 8, and we get 84. So 2 will be written here and here, and we got 84, which is the perfect square, and it is the perfect square of a number 22. Okay, this is the sequence which is starting from 1 and ending at 22, and these all are the natural numbers. Now write its set builder form. A set builder form is always starts from x such that x is equal to, हमने इस सेट को किस तरह डिफाइन किया है? हमने कहा है कि ये तमाम नंबर्स किसी न किसी नंबर के स्क्वायर्स हैं. सो n स्क्वायर. इज इट क्लियर? कॉमा n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. अब हम देखते हैं कि जो हमने इसको डिफ़ाइन किया है उसको हम राइट किस तरह से करेंगे, बाय यूजिंग सिंबल्स. अब हम n को डिफ़ाइन करते हैं कि n किस नंबर से किस नंबर तक है इस सेट में. तो n स्टार्ट हो रहा है 1 से 22 तक. इट्स मीन एंड 1 is less than or equal to n is less than or equal to 22. मीन्स कि जो हमारा n है, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, वो इस सेट में क्या है? वो इस सेट में 1 से स्टार्ट हो रहा है और 22 तक एंड हो रहा है. 1 and 22 इट्स themselves are included in this set, so we use the symbol less or equal to sign we are using here, because they both numbers are present in this set. So let's move towards another part. The second part is 2, 4, 8, 16 up to 256. Okay, x such that x is equal to. अब इसको देखें कि ये सीक्वेंस कैसा है. 2, 4, 8, 16 up to 256. ये सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन होगा. 2 power n means कि if we take n is equal to 1 we get 2. If we take n is equal to 2 we get 4. If we take n is equal to 3 we get 8, and 4, 16 up to so on 256. At what number it will give us 256? At number 8. 1, 2, 3, 4 up to 8. 2 to the power 8 gives us 256.
सो कॉमा n बिलोंग्स टू, n किस नंबर से बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड नाउ डिफाइन n, what n is, from which number it is starting from 1 and ending at 8, so 1 is less than or equal to n is less than or equal to 8. Okay student, part number 3 is that 0 plus minus 1 plus minus 2 up to plus minus 1000. This is very simple question, and these all numbers are belonging to Z, which are integers containing all numbers with plus and minus. So x such that x belongs to integer Z, and what is the definition, what is the speciality of this set is x such that x belongs to Z, and 0 which is the smallest number in this set. The smallest number is minus 1000. Minus 1000 is less than or equal to x is less than or equal to plus 1000. मीन्स ये सेट स्टार्ट हो रहा है स्मॉलेस्ट नंबर से minus 1000 up to plus 1000. So x lies in between minus 1000 and 1000, and minus 1000 and plus 1000 are also included in this set, so we use symbol like these with equal signs. Okay, now we have the fourth part of our question number 1. Okay, the fourth part is 6, 12, 18, so on 120. Okay students, look at this set. What is this? These all are the multiples of 6. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, up to 6 20s are 120. ओके देन इट्स मीन कि ये तमाम मल्टीपल्स हैं 6 के, तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 6n, because if we take here n is equal to 1 we get 6, and if n is 2 we get 12, if n is 3 we get 18, up to if we take n is equal to 20 we get 120. So n is starting from 1, so n belongs to natural number. And what is the condition, and what n is telling us? N is telling us that 1 is less or equal to n is less than or equal to 20. Okay, next is 5. Fifth part is 100, 102, 104 up to 400. ओके ये सीक्वेंस भी बहुत इजी है, ये आप देख रहे हो कि 100 में 2 प्लस हुआ 102, 102 में 2 प्लस हुआ 104, एंड 400, 100 में क्या प्लस करें, 300 प्लस करें तो 400 आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से लिखूं, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n, अगर यहाँ पे n 0 लिया जाए तो 100 आता है, ठीक हो गया। 0 लेने से इस डेफिनेशन में n को 2 लें, n को 1 लें तो ये 102 आता है, n को 2 ले लें ये 104 आता है, अप टू सो ऑन। अब n को क्या लिया जाए कि 400 आ जाए, अगर यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 150 लें, 152 आर 300, 100 प्लस 300 इज़ इक्वल टू 400, सो 150। ओके अब n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स। सो कॉमा
n belongs to W. Now apply the condition, and 0 is less than or equal to n is less than or equal to 150. Next is sixth part. Number sixth is 1, 3, 9, 27, 81 up to so on. अच्छा देखें ये क्या है जी, 1 है, 3 है, 9, 27. इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3 टू दी पावर n. मीन्स कि अगर n को 0 लें, 3 की पावर 0 क्या होता है? 1. ठीक है जी. अगर n की पावर 1 लें, 3 की पावर 1 3. अगर n हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 3 की पावर 2 होता है 9. अगर 3 करें तो 27, 4 करें तो 81 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये नंबर कौन से हैं? ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. इट्स मीन के n किससे बिलोंग कर रहा है? n इज़ बिलोंगिंग टू होल नंबर्स. n बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड आई थिंक सो कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो n है वो 0 से स्टार्ट होकर कॉन्टीन्यूड है. ठीक है, ये चलता जा रहा है. तो इस पे हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे कि n कैसा है, वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है. होल नंबर्स आर लिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड, सॉरी, they are starting from 0 and going on. Okay, now part number is 7. Our seventh part is VII 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 and 100. Okay, what this cell is set is telling us 1, 2, 4. Okay, this is 100. These all numbers are such that they all are divisible by 100. मीन के 100 के ऊपर ये तमाम नंबर्स पूरा डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, वी गेट नो एनी रिमाइंडर whenever we divide 100 with any one of these numbers. So we can say that x such that x belongs to divisors of 100. Divisors of 100, and that's it. Okay, divisors means कि जो सबसे बड़ा नंबर है हमारे सेट का, उसको ये तमाम नंबर डिवाइड कर रहे हैं और पूरा डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास नहीं है. 1 इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100, 2 इज़ द डिवाइज़र, 4 इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100, 5 इज़ द डिवाइज़र, and 10, 20, 25, 50 and 100 itself is the divisor of 100. So these all are the divisors of 100, means कि ये तमाम नंबर्स 100 को पूरा तकसीम करते हैं, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज़ 8th, and what is the 8th part? 5, 10, 15 up to 100. अच्छा जी, ये सेट को देखें तो ये भी बहुत सिंपल है. 5, 10, 15 और 100 तक, मीन के ये तमाम क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं. तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n, मीन्स कि अगर n में हम 1 पुट करें तो 5 आता है, 2 करें तो 10 आता है, 3 करें तो 15 आता है, अप टू 20 करें तो हमारे पास 100 आता है. ठीक है जी. तो n किससे बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑन n इज़ n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and ending at 20. So
1 is less than or equal to n is less than or equal to 20. Okay, the last part is ix, which is the ninth part of question number 1. The set of all integers, the set of all integers between minus 100 and 1000, वो तमाम इंटीजर्स लिखें जो माइनस 100 और 1000 के दरमियान में हैं. तो x such that x belongs to integers means z. x such that x belongs to z and minus 100 is less than x is less than 1000. कि जो x है वो लाई करता है बिटवीन दीज टू नंबर्स, बिटवीन माइनस 100 एंड 1000 के दरमियान में लाई कर रहा है. ये ख़ुद दोनों इंक्लूडेड नहीं है सेट में, तो हमने इसमें ये साइन नहीं लगाया. ये तब लगाते जब ये दोनों भी इस सेट में शामिल होते. इस सेट में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन माइनस 100 एंड 1000. So we use these symbols not less than or equal. We will not use the symbol of equal. Okay students, I hope you are now very familiar with the set builder notation, and our question number 1 part from 1 to 9 are completed now. Inshallah, we will do next question in our next video. If you have any question, then please ask in a comment section. We will meet with another interesting topic of a set. Till stay safe, stay happy, take care, bye bye.